ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಗೆನಗುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವಪ್ಪುದಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥವು ಇದಿರಲಿಪ್ಪುದಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದಿರಲಿಪ್ಪುದಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. 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 ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಹರ ಶಂಭೋ ಜಯ 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 ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವ 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವ
शिवाय शिव ओम नमः 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 शिवाय शिव शंभो शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा शंभो शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा We'll do meditation. थोड़ी देर ध्यान करते हैं. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೇಸರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸರಿಕೆನ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಯಕೆನ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗತ್ತೆ, ಶಾಂತವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗುರ್ತಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದೆಯೋ, ಬೇಸರಿಕೆ ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಎಡಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕೂತಿರಿಪ್ಪ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅದು ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೀಗಾಗ್ಕೂಡ್ದು ಹೀಗಾಗ್ಕೂಡ್ದು ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಕೂಡ್ದು, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಬರೀ ಚೈತನ್ಯದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಉರಿತವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬುಗಳು ಉರಿತವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏಕಮುಖಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಒಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. सो आज हम ध्यान करते हैं. ध्यान के वक्त मन जो है जूझता है दोनों विषय के बारे में. एक तो चाहत, मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. ये सब चाह को आप अपने दाहिने तरफ बिठा देना. पहले तो पहचानो मेरा मन में ये चाह है, वो सबको दाहिने तरफ बिठा देते हैं. फिर कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है. जो ठीक नहीं है और जिसको मन क्या कहते हैं विद्वेष करता है,
उसको आप अपने बाएं तरफ बिठा दो, थोड़ी देर के लिए तुम बैठ जाओ, देखते हैं, ठीक है ना, अब बैठ जाओ, बाद में देखूंगा, अभी हम खाली हो जाते हैं। चाह और नफरत या कहो कि मन मुटापा, दोनों से मुक्ति हो तो ही ध्यान संभव होता। Yeah, in today's meditation, what we keep in mind is all the so-called individuals are just bulbs, but the electricity is only one. One electricity, like a serial bulb, you know. See that there are serial bulbs here. They all appear to be different, but underneath there is only one current. So shifting our mind from the different color bulbs to the one electricity, that is the shift we need to make. How can you make this? Because your mind is swinging. Mind is swinging between wants and frustrations. We are unhappy about something. We are frustrated about that. This is not okay. This should change. This should happen differently. All that wish of something which is not okay, you keep it on your left side and identify all that your mind says, I want this, I want this, I want this. Keep that for a moment to your right side. We can tell them, okay, you guys, you sit there, we'll attend to you later. Right now, I have become completely empty of wants and dejections or frustrations. Okay? Shall we do that? हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें, चेहरे में एक मुस्कान हो, ಗಹರಿ ಸಾಸ್ ಲೀಜಿए, ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. Take a deep breath in and let go. Identify all your deep desires. If there are any that is coming up at this moment, tell them, okay, you stay to my right side for a while. Let me be free of cravings. Deep breath in. Now identify all your hours too. Many things are not okay. You tell them all, okay, you all sit here on the left side. Take another deep breath in. Like the sound spreads in the whole atmosphere, let your mind also spread. Your mind is thinner than air, and so it expands and spreads naturally. You simply have to let go. ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ, ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡಿ. मन हवा से भी सूक्ष्म है और पतला है और वो फैलता है. ओंकार के साथ मन को फैलने देते हैं और हम विश्राम करते हैं.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. Slowly and gradually become aware of body and surroundings. And very gradually and slowly you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? Was it good? Yeah, very deep. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುಜಿ. Mm-hmm. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು. Mm-hmm. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಗುರುದೇವ್? ಬಯಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜ್ವರ ಹಿಡ್ದಂಗೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು. ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಬಯಕೆಗೂ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್, IWC ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಗುರುದೇವ್. ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಗುರುದೇವ್? ಹೌದು ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಗುರುದೇವ್, ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ರಸಾಗ್ನ್ಯ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ರಸಾಗ್ನ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೇ? ಅದು ದೈವಜ್ಞ ಅಂತೀವಿ, ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸವಿರಿ. ಸಾಕಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗುರುದೇವ್, ಒಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೈವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Gurudev, ಹಾಂ, some creators have recently gotten in trouble for making vulgar jokes on a public platform. They influence millions of young minds collectively, and now there's police action over this. As a society, what is the appropriate way to handle this? I think these incidents will teach a lesson for everyone not to go
in that route. It's all right to make fun, but not to be vulgar and hurt others' feeling. You should not make fun at the cost of someone else. It may appear to be like a fun for you, but it hurts others deeply. One must be careful about those sort of things. This is because people are trying to be funny. They are really not funny, I tell you. Many of these comedy shows, my God, they try so hard to make a joke, make people laugh. If they're just a little bit natural, everybody will anyway laugh. You have to be yourself in order to create a lighter atmosphere. Right? Yeah. Gurudev, when will we have an international men's conference? That's a good question. I'll leave that to all the ladies. You can bring your brothers, your husbands, and your children here and make men's conference. Yeah. Because you are too good in organizing and very good in executing, organizing, executing. So I think that is also in your hands. Yeah, you may do that. Maybe next year we can have spouse conference, all of you, and then men's, or your brothers and bring them all. We'll do. Yes. Gurudev, is it important to put effort in getting noticed? I prefer to do my work quietly and support the team, but I often find people who talk a lot get ahead and succeed. You have to go in between. There is a saying in India, the lamp inside a pot. A lamp inside a pot does not bring light to everybody. This is the challenge with Art of Living also. Many people say, you have so many things, but people don't know about this. So, you say, yeah, you're right. We are also not too good in making noise, making publicity and all that stuff. But it seems it is a little bit necessary for people to get to know about it so that they can get benefit. So there is nothing wrong in saying what you are doing and making it more available and making aware of what all the work you have done. This is necessary, I think. Yeah, Art of Living has learned this after a long time. Because we were also only doing the work and not making a noise. Now it seems it is necessary so that it can inspire many more and it can also benefit many more by that. Our intuition process we have been teaching our kids from more than a decade now. So, but there are many duplicates which has come up. Some people have learnt here and not fully learnt and started doing that. So there is duplicacy in many things. Imitation. So because we were not so keen on creating awareness about it, but now we need to know. I mean, we need to bring out the original thing to people. What do you think? Isn't it? गुरुदेव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर जो कभी प्राचीन ज्ञान और सभ्यता के केंद्र थे, वे आतंकवाद से जुड़े क्षेत्र कैसे बन गए? इन क्षेत्रों के सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा ने इस परिवर्तन में क्या भूमिका निभाई है? भाई, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो बैठ के विश्लेषण करो. ये सब बैठ के क्यों हुआ, क्या हुआ, विश्लेषण करने से मिलेगा क्या? अभी हमें क्या करना है इस पर सोचो. सब जगह लोग अच्छे हैं.
कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दिमाग विकृत है, ऐसे विकृत लोग दुनिया भर में हैं। इन लोगों के दिमाग ठीक करना तो अपना काम है, अपना ये करते जाएंगे। ज्ञान का भंडार खोलो, सब लोग उसका रस लेंगे तो परिवर्तन होता रहेगा। हमें यही सोचना चाहिए, हमारे पास जो खजाना है, ज्ञान का भंडार है, इसको हमने वितरण नहीं किया, अपने आप में रखे बैठ गए थे। ये भी एक कारण हो सकता है, मगर उस पे खोजने, उस पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना काम करते चलेंगे। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? गुरुदेव, बहुत से माता पिता अपने बच्चे के गे या जेंडर फ्लूइड होने को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस विषय में उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए? अब देखो, आप अपने आप को इस तरह से कोई पट्टी नहीं अपने ऊपर लगाओ। ये जानो आप नूर हो, आप एक ज्योति हो। ये सब टेंडेंसीज जो है ये तो बदलते रहते हैं भाई, ये आते हैं फिर जाते हैं। इन चीज़ों में इतना ज़्यादा मातापाची करने की कोई दरकार नहीं है। हाँ, कितने लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है अरे मेरा तो रुचि इसमें नहीं है, मैं तो दूसरे टाइप का हूँ, इस तरह से मन में होने लगता है। और उसका उल्टा भी हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आपके भीतर दोनों स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, और आप इन दोनों तत्वों से परे हो, आप आत्मा हो, आप चैतन्य हो। इस पर ध्यान दो, आध्यात्मिक पथ पे चलोगे ना, बाकी ये सब शारीरिक और मानसिक ये सब जो जंजाल में फंस के खुद को भी दुखी दूसरों को भी दुखी करते ना, इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है? जीवन आनंदित, जीवन में आनंदित रहोगे, औरों को भी खुशी लग जाओगे। गुरुदेव, जब मैं नशे की बुरी आदतों में था तब भी मेरे परिवार को मुझसे समस्या थी। अब जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों का पालन कर रहा हूं तब भी मेरे परिवार को मुझसे समस्या है। मैं क्या करूं? कन्नड़ में एक बहुत अच्छी एक गीत है, वो कहते हैं कि जो लोग पसंद करते हैं वो चीज़ यहाँ दुनिया में है नहीं। कैसे? गर्मी में बोलते हैं अरे बहुत गर्मी, सर्दी में बोलते हैं अरे भाई सर्दी, और बारिश होते अरे भाई शनि, बारिश बंद नहीं होता। तो इवरु मेಚ್ಚುವ वस्तु इल्लिल्ल जोके, अरे भाई सब खबरदार रहो, इन लोगों की पसंद की चीज़ यहाँ हो ही नहीं सकता। जो बैठे हैं उसको बोला अरे क्यों बैठ गया, जो चल रहे हैं वो बोले तुम कहाँ दौड़ रहे हो, तो जो लेट गए तो बोले देखो लेटा रहा है, आलसी बोलते हैं। तो लोगों को खुश करने के लिए प्रयत्न करने रहे वो नहीं संभव है। तो अपने आप में प्रसन्न रहो, खुश रहो। तुम्हारा जीवन में जो परिवर्तन आया उसको देख के फिर लोग आगे वो समझ लेंगे, समझते जाएंगे। ठीक है ना? गुरुदेव, जब कोई बार बार रैगिंग करता है, मेरा मजाक उड़ाता है और वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है, तब मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं? अच्छा सुनो, प्रतिक्रिया नहीं करना, उसको उसके साथ क्रिया करो। अच्छा उसको बोलो अरे आप बहुत अच्छा इंसल्ट करते हो भाई, इससे भी और बेहतर कर सकते हो क्या, पूछ लो उनसे। अच्छा आपने इतना अच्छा हर्ट करते हो,
और इससे भी ज्यादा मजाक को उड़ा सकते हो क्या? उड़ाको देखते हो, ऐसा करके बोलो उड़ाओ और उड़ाओ, देखते क्या करते। हम सीना थान के खड़े हैं, बोलो तुम कितना गाली देना चाहे, गाल इससे बेहतर दे सकते तो ये दे दो, देखता हूं, करके तो देखो एक बार। अरे झुकना नहीं किसी की गालियों में, किसी की रैगिंग में तो टूट मत जाओ, खड़े रहो ऐसे सीना थान के, देखो वो सब शर्मिंदा होके भाग जाएंगे। कहो तो सही एक बार, भाई इससे बेहतर गाली दे सकते हो क्या तुम? बहुत अच्छा गाली देते हो तुम, दे दो, देखता हूं, सुनना चाहता हूं। अरे युक्ति से तुम्हें जीतना है भाई लोगों को, क्या युक्ति होनी चाहिए। ऐसे ही जीवन में थोड़ा सा हास्य होना चाहिए। हास्य रस होने से किसी भी तरह की संघर्ष को तुम आसानी से पार कर सकते हो। समझ रहे हो ना? कोई बोलते तुम गधे हो, बोले हाँ शीतला माता का वाहन हो, तुमको भी ठंडा कर देता हूं, आ जाओ। या बोला हाँ जी, अच्छे से हम लात मार सकते हैं, बोला देखना है आपको, बोला अच्छे से हम लात मार सकते हैं। अरे भाई थोड़ा सा जीवन में ह्यूमर चाहिए, विनोद चाहिए, है ना? हर बात को इतना सीरियसली लेके दुखी ना होना। समझ रहे हो कि नहीं? हमारी समस्या यही है, हर बात को इतना गंभीरता से ले लेते हैं और खुद भी मुसीबत में रहते हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। गुरुदेव, जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तब जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वह उन्हीं के माध्यम से आता है, ऐसा मैंने समझा है। तो जब हमसे कोई गलत कार्य होता है तो क्या वह भी गुरु के माध्यम से होता है? अच्छा ये तुम तरकीब निकाल लिया क्या? अपना गलतियों को करने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हो? ये है ज्ञान का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं करना है। जब गुरु से विमुख होते हो तभी तुम गलत करते हो। जब तुम प्रकाश के सामने देख रहे हो तो कहां तुम्हें परछाई दिखेगी? जब रोशनी से विमुख होते हो तो परछाई दिखती है। गलती तो सिर्फ ऐसी परछाई जैसे है। अब तुम प्रकाश के सम्मुख नहीं हो, कहीं मुंह फेर लिया तभी हुआ है। अब ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। मगर ये मत सोचो गुरु ने तुमसे करवाया, किसी के जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे उठाए, फिर ये ना कहो कि गुरुदेव ने बोला जी पैसे। और फिर पता है क्या होगा? गुरुदेव ही पुलिस भी भेजेंगे तुम्हारे पीछे। इतना मानने के लिए तुम तैयार हो, कर्ता और भोक्ता दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो तो कोई हर्ज नहीं तब तो, ठीक है? हाँ, बस आज इतना काफी है। हाँ हाँ, now you have to do that to many others too. Yeah, good. Yeah. Jai Gurudev. Gurudev, we just heard there were a few comedians who were booked by some organizations. There were some organizations who complained about the nature of the humor and the joke. And the
police administration and a lot of legal organizations outraged against it, fairly so. But parallelly, there was an incident where marital rape was not considered as a crime and a man was freed, even though his wife died brutally by his hand. Do you think, and there was no outrage by anyone as a society, even the administrations, do you think our priorities are misaligned or are biased in some way? We always stand up against all type of bias, and I say people should stand up for that. Whoever it is, someone has done wrong, they should face the law. Yeah. There is a music today, I think there is a concert from that announced, no, Bengali youths have come from Calcutta. They'll be singing. Huh? Yeah, yeah, yeah. Everybody is invited to the yoga school today at 8:30 p.m. for a musical evening. It's going to be a mesmerizing evening, an unmissable evening. Good, 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 good. Oh, it's in the yoga school? Yes, Gurudev. There? Yes, Gurudev. Okay. Good, good. हिंदी में भी बोल दो और मैं ही बोल देता हूँ योगा स्कूल है ना वहाँ पीछे वहाँ पर लॉन है उधर संगीत का कार्यक्रम है यार बंगाल से आए हैं बहुत अच्छा गाने वाले दे आर वेरी वेरी नोन It's a concert by Saurendro Maulik ji and Saumyojit Das ji from Bengal. Very nice. Gurudev, wait, please. Jai Gurudev. लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी ता से बनता सकी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अदी दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी है ओ चार चराग तेरे बरने हमेशा चार चराग मेरी
झूलेला 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 झूलेलालण झूलेलालण दमादम मस्त कलंदर हरी संभावना गंदम गुरु दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर हरी सा पहला नंबर गुरु दा पहला नंबर गुरु दा पहला नंबर गुरु दा पहला नंबर गुरु दा पहला नंबर